Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. आज मेरे पास before we actually proceed to the article, I would want to highlight the importance of today. तो आज का दिन basically दो important events के लिए जाना जाता है. First, it is the attack on the Indian Parliament. तो we commemorate this attack, and this attack basically happened in 2001, and आज उसकी 23rd anniversary है. Apart from that, there's a very prominent Indian philosopher. His name is B. Govindacharya. He died on this particular day, and he was a prominent Sanskrit scholar and philosopher, जिन्होंने वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, पुराण, बहुत सारे important areas में contribution दिया था. And he was also awarded the Padma Shri by the government of India in 2009. So with this, I have two articles for the day. जिन पे हमें आज बात करनी है. इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल्स लिए मैंने आज. फर्स्ट ऑफ ऑल, 9 years आफ्टर बीइंग फाइनलाइज्ड, पेरिस अग्रीमेंट की आज 9th एनिवर्सरी है. इट बेसिकली वाज फाइनलाइज्ड ऑन 13th of December 2015, and this article basically is a post-mortem as to what has happened in the past 9 years. तो जो स्टूडेंट्स को देखना है वो ये है कि व्हाट वर द टारगेट्स एसोसिएटेड विद पेरिस क्लाइमेट समिट. तो वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि द मेन गोल ऑफ द एग्रीमेंट वाज टू होल्ड ग्लोबल एनुअल एवरेज टेम्परेचर विद इन 1.5 degree Celsius ऑफ प्री इंडस्ट्रियल एवरेजेस. एंड अगर बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तो वी हैड टू होल्ड इट टू 2 degree Celsius इन द वर्स्ट केस सिनेरियो. बट दिस डज नॉट लुक लाइक हैपनिंग. तो सिचुएशन हैज गॉटन वर्स. आर्टिकल में ही लिखा है कि इन दीज 9 years एनुअल ग्लोबल एमिशंस हैव ग्रोन 8% फ्रॉम अबाउट 49 billion tons to 53 billion tons. So obviously we are not doing well in terms of reducing carbon emissions. Average annual global temperatures have increased from 1.1 degree Celsius above the pre-industrial level to 1.45 degree Celsius above that level. And जो अभी current assessment है, they suggest that 2024 is almost certain to be the first year to breach the 1.5 degree Celsius threshold. So actually the temperature rise which we were somehow concerned about is going to take place. There are some other things which are written here. जैसे यहाँ पे International Court of Justice has been mentioned. I think you should make a note of as to what this is. And it is an organ of the United Nations. What are its various facets? These need to be known by the students. Small island developing states have now started to aggressively revolt because they were expecting action in terms of climate change. Action has not come into picture. फिर यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है वो लिखी हुई है कि पेरिस एग्रीमेंट के पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, एंड दिस वाज इन रिस्पांस टू द 1992 यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड इट प्लेस्ड द बल्क ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज ऑन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज. उन पे ज्यादातर दारोमदार था. अल्टीमेटली दैट डिड नॉट हैपन, एंड डेवलपिंग कंट्रीज आज भी अगर देखें तो, क्योंकि वी हैव हैड अ समिट इन अजरबैजान, बाकू, and the amount which had been decided, it's approximately $1 trillion. Developed countries have refused to basically give away that amount, and there has been a consistent deadlock since then. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पुराने contributions भी लिखे हुए हैं, जैसे कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हुई है, which is in 2009, but it eventually also failed. And Paris agreement के केस में माना जा रहा था कि Paris agreement is going to be a success because यहाँ पे the change was that they are only going to talk about nationally determined contributions. Before Paris Agreement, everything was binding. यहाँ पे the nations actually had to decide by themselves and for themselves as to how much is going to be their target to reduce climate change. सारी countries ने बहुत ज़्यादा effort नहीं लगाया, and that is why it is being seen that things are not looking well in terms of climate action. This is the amount. यहाँ पे फिर बाकू की बात की है कि developed countries agreed to raise $100 billion amount to just $300 billion a year, and that too only from 2035. This is exactly the reason why this deadlock basically came in between developed and developing countries. इसमें एक issue और जो important हो जाता है वो है the election of President Donald Trump, because when he returns to power, he in his previous terms had brought US out of the Paris Climate Agreement, and it is being anticipated that this is something which he once again going to do. तो अमेरिका जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, अगर इस तरह का बड़ा देश क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा तो थिंग्स आर गोइंग टू फर्दर गो डाउनहिल. दैट इज द असेसमेंट. फिर देयर आर सम स्मॉल आइलैंड नेशंस. वनुआतू का नाम लिखा है यहाँ पे. आई थिंक यू शुड check as to where Vanuatu is located in your atlas as well. And this is a very small island nation
which is located northeast of Australia. And this has brought in a resolution which is to be passed by the UN General Assembly, और जिसमें ये बात कर रहे हैं कि countries कैसे अपनी climate obligations को meet करेंगे, because it is these small island states which are going to be the most frequent and tremendous sufferers when it comes to the impact of climate change. तो उस पे बातचीत फिर यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो आई थिंक दिस इज एन आर्टिकल जिसमें एक छोटा सा असेसमेंट दिया हुआ है ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. स्टूडेंट्स के लिए काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनरिच्ड कंटेंट है. फिर इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में है, हाउ मच वाटर डज इंडिया हैव अवेलेबल. सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट में ये असेसमेंट आया है. तो इफ यू कम अक्रॉस एनी रिपोर्ट्स, एनी important facts which are mentioned in that report, please make a note of them because they usually are important from your exams perspective. आप उसको मेंस में कहीं ना कहीं लिख सकते हैं. तो द सेंट्रल वाटर कमीशन इन इट स्टडी, इसका नाम है असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024 रिपोर्ट, and it estimated that India's average annual water availability between 1985 and 2023 stood at 2111 BCM, billion cubic meters. अब ये अवेलेबिलिटी, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये सबसे पहला तो ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी को असेस कैसे करते हैं. तो इट इज असेस्ड फॉर ऑल द रिवर बेसिन्स इन द कंट्री एक्सक्लूडिंग 3 वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, झेलम एंड चेनाब. एंड व्हाई दीज हैव बीन एक्सक्लूडेड? बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से दीज रिवर्स, द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ दीज रिवर्स गोज टू पाकिस्तान. According to CWC report, Brahmaputra, Ganga and Godavari were the top 3 basins with the highest water availability across the country, while Sabarmati, Penar and Mahi were bottom 3 basins in terms of availability. So this needs to be remembered. इसमें फिर availability in terms of various rivers लिखी हुई है. This is a very elaborate एक तरह से table which has been given in this article. I think you should have a look at it, and it will add value to your answers when you quote such BCM data in your answers. पुराने assessments के हिसाब से things have suggested that the water availability has increased. So this is a good figure. Why is the current water availability figure higher than the previous assessment? क्यों हुआ ऐसा? Because of methodological factors. First, the new assessment takes into account Bhutan's contribution to Brahmaputra, which was not included in the earlier assessment. Second, Nepal's contribution to the Ganga was only partially taken, and that is the reason. ऐसा नहीं है कि देश के नदियों में पानी actually बढ़ गया है. This is because some other methodological changes have been brought, and that is the reason we are seeing greater amount of waters in the various rivers. अच्छा, ये assessment का importance क्या है? इस article में बात हुई है, which says that such assessment is important because obviously the utility of water is changing. We have had tremendous amount of industrialization, urbanization, and climate change has also played a heavy toll. तो इस वजह से हम आसानी से सही तरीके से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है कितनी. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू मेजर वाटर स्कार्सिटी, बिकॉज जितना ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा उसी हिसाब से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी निकलेगी. फिर इसको इंडिकेट करने के लिए दे हैव आल्सो मेंशन्ड अ इंडिकेटर व्हिच इज कॉल्ड फॉल्कन मार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स. यू कैन रीड मोर ऑन दिस. और ये इंडेक्स कहता है कि इफ अ कंट्री वुड बी डीम्ड टू बी अंडर वाटर स्ट्रेस, the per capita water availability in a country is below 1700 cubic meters, or a per capita water availability under 1000 cubic meters puts a country in water scarcity category, or 500 cubic meters से कम है मतलब absolute water scarcity. So this shows that things do not look good as far as India is concerned, क्योंकि हमारी जो current numbers है, this was 1486 cubic meters based on annual water availability of 1992. लेकिन अगर अगले असेसमेंट को हम ध्यान में रखें तो इट इज गोइंग टू बिकम 1513 बिकॉज वी हैव इंक्रीज दिस नंबर. बीसीएम हमारा बढ़ा है तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है, बट इट इज स्टिल लो कंपेयर टू द 1700 क्यूबिक मीटर मार्क which is important for a country to be categorized under water stress. So we are a country which is under water stress for now as per this assessment. तो इस तरह के नंबर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हम जब मेंस में आंसर लिखें तो वी शुड ट्राई एंड राइट such numbers. So I think this also is a very good article and has a lot of factoids which are important from our exams perspective. With this, now I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion further. Thank you, sir. I have one important article from the Indian Express today. This article is regarding the amendment in the Disaster Management Act of 2005. तो ये recently Disaster Management Act जो बिल है 2024 जिसको लोकसभा ने पास किया है, तो वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आई विल शो यू.
what are the changes from the last from the original act, which is Disaster Management Act 2005. The bill introduced this year proposes creation of disaster databases at national and state level, constitution of Urban Disaster Management Authority for state capital and large cities having municipal corporations, and also constitution of State Disaster Response Force by the state governments. तो ये तीन इसमें important major changes हैं, and we are also going to discuss the small changes. इसके लिए मैंने आपको एक टेबल क्रिएट की है जिसमें बिफोर क्या था उस एक्ट में, आफ्टर अंडर दिस बिल क्या चेंजेस आए हैं, तो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को लेके, पर्टिकुलर हेडिंग्स को लेके मैंने क्रिएट किया है. तो इफ वी सी द फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी. और पहले ये होता था कि ये कमिटीज जो थी, they assist NDMA and SDMA in creation of disaster management plan. But under this new bill, NDMA and SDMA will directly prepare the national and state disaster management plan. So ये एक difference है. Second, functions of NDMA and SDMA. As NDMA and SDMA review disaster management plans of government departments, set guidelines and recommend funding for mitigation. ये एक्ट का प्रोविजन था. इसमें कुछ नए फंक्शंस ऐड किए हैं पर्टिकुलर बिल ने. टेकिंग स्टॉक ऑफ डिजास्टर रिस्क, then providing technical assistance, then recommending guidelines for relief standards and also preparing disaster databases. तो ये कुछ नए फंक्शंस हैं. एक और एडिशनल फंक्शन है, will also assess disaster preparedness of states and conduct post disaster audits of preparedness and response. तो ये भी कुछ एनडीएमए के फंक्शन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के. देन रेगुलेशंस बाय एनडीएमए, ये पहले स्पेसिफाइड नहीं था एक्ट में, जो अभी बिल में स्पेसिफाई किया गया है कि इज empowered टू मेक रेगुलेशंस अंडर द एक्ट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. देन मैंने जैसे कि अभी आर्टिकल में बताया, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, पहले एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं था. करंट बिल में स्टेट गवर्नमेंट्स में कंस्टिट्यूट एन अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर स्टेट कैपिटल्स एंड सिटीज विथ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विथ स्पेसिफाइड लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसमें कौन लीडर रहेगा कमिटीज का, अथॉरिटी का, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सब कुछ नए बिल में मेंशन है. Again, one more thing which was missing in the earlier act or the original act is the formation of state disaster response force. The original act prescribed the national disaster response force for the disaster response. Now the new act also has the provision for the state governments to form a state disaster response force and define its functions and terms of service for its members. तो ये नया बिल जो है वो एक और नई बॉडी है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की भी बात करता है. देन स्टेचुटरी स्टेटस टू एग्जिस्टिंग कमिटीज, कुछ कमिटीज थी जिसको स्टेचुटरी स्टेटस नहीं था अर्लियर एक्ट में. बिल ने ये किया है कि देन नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एंड द हाई लेवल कमिटी, ये दोनों कमिटीज को स्टेचुटरी स्टेटस दिया है अंडर दिस पर्टिकुलर बिल. इसमें जो फर्स्ट कमिटी है उसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड वाइल द मिनिस्टर चेयर्स द हाई लेवल कमिटी. Appointment to NDMA. The central government appoints officers, consultants, and employees as necessary. But the new bill also specify that NDMA can specify the number and category of officers and employees with central government approval. So NDMA may also appoint experts and consultants. So इसमें NDMA की powers को increase किया गया है थोड़ा सा. So these are the changes, major changes. इस फॉर्मेट में हम याद रख सकते हैं कि अर्लियर एक्ट में क्या था, नए बिल में क्या प्रपोज किया गया है, जो अभी रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है. So under this article, these are the important facts. Other than this, under disaster management, GS paper 3, whenever there is a mention of a disaster, so NDA में क्या guideline निकालता है उस particular disaster को लेके, that is very important, जो students को read करना चाहिए. जो हम UPSC directly mains में NDA में guideline भी पूछता है, directly mention करता है questions में. Then also if it is not being asked, then we can also mention it under the disaster management heading. So this particular article becomes very important in that perspective. So this was all from my side. Now with this, I will end today's discussion. Thank you all.